Hello friends, myself Dr. K.S.Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. Friends, I welcome you all for the SYBSc Chemistry Paper 3, and we have already discussed about the first unit, that is Introduction to Analytical Chemistry and Statistical Treatment of Analytical Data. So friends, in this overall series we have discussed about the importance of analytical chemistry and how the data is treated which is obtained from various experiments. So this will be our revision lecture where we will take some ideas about the discussed content. So we can see that what is the role of analytical chemistry. So as we have already discussed in this series that the various aspects of chemistry like organic chemistry, inorganic, physical, they have their own importance, but besides that the analytical chemistry has its own significance. Okay, so analytical chemistry is a science which is useful to obtain, process and communicate the information which is obtained from the composition, or we can say the structure of the matter. Okay, so in simple words we can say that it is a very important technique from which we can find out what is present in matter and how much is present in that matter. Okay, so when you discuss what is present, it is called as qualitative analysis, and when we say how much is present, then it is called as quantitative analysis. So whenever a sample is given to you, okay, so sample is a little bit tedious word, but in simple manner we can say that in the matter what is present and how much present is very important. Okay, so that particular determination is discussed in analytical chemistry. Okay, so we can further say that it is the process of identification, characterization and estimation of the component of that particular sample. So whenever a big portion of universe is given to you, we have to take small part out of that. Okay, and that small part is called as sample, and when you perform various processes with the sample, there can be the identification, okay, then characterization of that sample. This all information is obtained through analytical chemistry. Okay, so it will provide you the answer for basic question that what is present in that matter and how much amount is present in that matter. Okay, so for that we can use various techniques. Okay, and that all techniques are discussed in our analytical chemistry. Okay, so basically in analytical chemistry, the person who will perform that experiment, we can say analytical chemist, he has various problems. Okay, and he has to find out the answers for those particular problems. So it is nothing but the science of chemical characterization, and it also concern with the method used for that. Okay, so that techniques where it is used is called as analytical chemistry, and the techniques which are used is basically called as chemical analysis. Okay, so from a particular sample, when you perform quantitative and qualitative analysis, or we can say the determination of composition of that particular sample, is called as chemical analysis. So for example, we can say that you are given a particular sample and you are finding out how much amount is present in that. Okay, then it will be called as chemical analysis. So various titrimetric methods, gravimetric methods, that we have already discussed in that chapter, right? This is our revision lecture, so I hope you remember these terms, and these different methods are actually called as methods of chemical analysis, right? So what we can say that analytical chemistry or analytical chemist should possess some knowledge to perform the various experiment.
he has to apply some fundamental principles, some methods to perform the chemical analysis. Okay, so these chemical analysis can be performed using various methods where there are certain instruments, certain apparatus, and using that technique he can find out the quality and quantity of the sample, which is also called as analytical chemistry or analysis. Then we will see that what is the objective of analytical chemistry, right? So analytical chemistry, it has the first objective that it should provide the fundamental knowledge of the principle which are involved for the chemical analysis or quantitative or qualitative analysis of the particular matter. Then we should have research knowledge or the perspective of research for the analytical chemistry. Then the next objective can be identification of the substance, and it is also about the structural elucidation and also about the quantity of that particular sample. Okay, so in that sample, suppose there are various components, so we have to find out what components are present and in how much amount it is present. Then we can also develop various method of analysis. So it is not always possible to apply same type of analysis, but we can perform series of experiment with different type of analysis. And the very important purpose or objective of the analytical chemistry that we should always protect the environment. So whenever you perform any experiment or we do anything, our environment should be protected. As a chemist, we should not perform any experiment which is harmful to the environment. So our procedures, our chemicals, and our view should be eco-friendly or environment friendly. So whenever we go further or we go beyond these techniques, it should be always eco-friendly. So our first aim is always to protect the environment. Then we have also discussed about the various terms involved in analytical chemistry. So that is accuracy, right? So what is accuracy? It is the agreement between number of observation and true value. So far now we have discussed about all these terms. Okay, so what is accuracy? Whenever you perform any experiment, okay, you get some ऑब्जर्व वैल्यू. अगर आप टाइट्रीमेट्री एनालिसिस करते हो, टाइट्रेशन करते हो, तो आपको खुद को उसकी एक वैल्यू मिलेगी, एक रीडिंग मिलेगा जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्व वैल्यू. एंड ऑलवेज देयर इज़ अ ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए थी, राइट, अ पर्टिकुलर और स्पेसिफिक वैल्यू. सो आपका आंसर और ट्रू वैल्यू एक दूसरे के कितना करीब है, कितना नियर है, दैट इज़ कॉल्ड एज एक्यूरेसी. So it is the measure how closely your result and actual result is, right? So that is called as accuracy. Then next is precision. Okay, so precision is the agreement between number of observation themselves during, or we can say between, the set of observation. एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में अगर आप 10 वैल्यू निकाल रहे हो तो उन वैल्यूज़ में एक दूसरे के कितने क्लोज है, that is called as precision. See, there is difference between precision and accuracy. Accuracy is the nearness of your observed value and true value, right? And precision means many observed value, वो एक दूसरे से कितना नियर है, that is called as precision. Then there is reproducibility. So it expresses the precision between laboratories, collaborative studies यूजुअली अप्लाइड टू स्टैंडर्डाइज द मेथोडोलॉजी. हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो सिर्फ एक लैब में या एक कॉलेज में नहीं होता है, इट इज़ वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल. सो वॉट एवर योर रिजल्ट इज़ देयर, इट शुड बी सेम एट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. ओके, सो जो मेथोडोलॉजी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट, जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. मीन्स इट शुड गेट सेम रिजल्ट all over the world. That is called as
reproducibility. Then there is selectivity, right? Selectivity of a method is defined as the degree to which the method is free from interference present in the matrix. So क्या होता है कि सपोज आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसमें से आपको एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है, बट आप उसमें जो भी केमिकल्स ऐड करोगे वो सिर्फ उसी कंपोनेंट को इफेक्ट करेगा ऐसा नहीं है. सपोज अलॉन्ग विथ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट देर आर 2-3 मोर एलिमेंट्स, तो आप जो भी मेथड अप्लाई करते हो वो सबको अप्लाई हो जाती है. सो हम लोगों को ऐसी मेथड यूज़ करनी है विच इज़ सिलेक्टिव फॉर दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट. तो जितनी ज़्यादा सिलेक्टिविटी उतना हमें रिजल्ट भी अच्छा आएगा. ओके, सो selectivity of chemicals or particular method is very important to obtain correct result. Then next is sensitivity, right? So sensitivity of the analytical method is a measure of the ability of the method to discriminate between two small concentration differences in the analyte. जो आपको एनालाइट दिया हुआ है दो अलग अलग है मानो, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिफरेंस है अगर वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सेंसिटिविटी. सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज आवर करेक्ट रिजल्ट इज कंसर्न. देन देर इज लिमिट ऑफ डिटेक्शन. ओके, सो इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन कंपोनेंट that can be detected with a given degree of confidence. सी लिमिट ऑफ डिटेक्शन मतलब क्या? सपोज आप पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर रहे हो तो उस मेथड से आप उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना कम से कम लेवल फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? कभी कभी हम लोग कहते हैं माइक्रोग्राम्स, मिलीग्राम्स, है ना, या फिर नैनोग्राम्स, तो ये हो गया उसका अमाउंट. तो ऐसे कम से कम कितना कॉन्सेंट्रेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज limit of detection of that particular method, we can say. Okay, so that method or that way we can say it is degree of confidence. So limit of detection is also very useful for the analytical chemistry. And the last terminology used is called as limit of quantification. So the minimum amount of concentration that can be estimated with the given degree of confidence is called as limit of quantification. Okay, so it is the amount or we can say the concentration of particular component that is determined through that particular method. This is called as limit of quantification. So these are all different terms which are used in analytical chemistry. Then depending upon these various techniques or the various method we can say what is the purpose of chemical analysis. तो हम लोग chemical analysis क्यों करते हैं? तो अगर आपको कोई सैंपल दिया है तो उस सैंपल में, और सैंपल हम लोगों को क्यों मिलता है, एक बड़ी सी कोई जगह हो सकती है ना, लॉट ऑफ सॉइल और लॉट ऑफ वाटर और कोई एनवायरमेंटल कंपोनेंट हो सकता है, तो हम लोग पूरा एरिया स्टडी नहीं कर सकते, तो हम उस पूरे एरिया से क्या करते हैं, पर्टिकुलर सैंपल रिमूव करते हैं या विड्रॉ करते हैं, एंड दैट सैंपल इज़ गिवन वेरियस ट्रीटमेंट. ओके, तो ये सैंपल को हम लोग ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, उस सैंपल में क्या प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए, एंड हाउ मच अमाउंट कितना प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करने के लिए. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल एनालिसिस. तो केमिकल एनालिसिस दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. आपको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, दो तो हम लोग देख चुके हैं, क्वालिटेटिव मतलब क्या प्रेजेंट है, एंड क्वांटिटेटिव कितना प्रेजेंट है. तो अगर क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है तो उसे हम लोग कहते हैं नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड. सो डिपेंडिंग ऑन दैट देर आर 4 मेथड्स. फर्स्ट वन इज proximate analysis. Okay, so in proximate analysis it involves the determination of elemental composition of the sample irrespective of the chemical form in which elements are present. तो हम लोग elemental composition find out करते हैं. Okay, then there is next one partial analysis.
सो इन पार्शियल एनालिसिस क्या होता है, पार्शियल मतलब इसमें ओनली वन कंपोनेंट ऑफ द सैंपल इज डिटरमाइंड. ओके, यू डोंट हैव टू स्टडी द होल सैंपल. आपको उसमें से पहले क्या करना होगा, सारे कंपोनेंट उसके सेपरेट करने, और उसमें से जो आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, देखो जिसकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही एक हम लोग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल एनालिसिस. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप मेटलर्जिकल सर्वे कर रहे हो तो उसमें से किसी एक कंपोनेंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर information. So that is called as partial analysis. Then the next one is called as trace analysis. देखो ट्रेस एनालिसिस में क्या करता है, इट इज़ वेरी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एनालिसिस ऑफ पार्शियल एनालिसिस. मतलब पार्शियल एनालिसिस में भी अगर कोई कंपोनेंट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ट्रेस अमाउंट में, तो उसके एनालिसिस को हम लोग क्या कहेंगे, trace analysis. So it is used to detect or quantify very small amount of the substance. Okay, so this type of analysis falls into a larger group of analytical chemistry where we can find out the quantity of very small amount of substance. So अगर हम लोग कोई फार्मास्यूटिकल टैबलेट कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट है. ओके, टैबलेट कितना छोटा होता है तो उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे दैट विल बी इन वेरी स्मॉल अमाउंट. सो दैट लेवल ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड एज ट्रेस एनालिसिस. एंड फाइनली द फोर्थ टाइप ऑफ दिस कैटेगरी इज complete analysis. So in complete analysis it refers to one in which detailed information regarding the sample is determined. अगर आपको दिया हुआ सैम्पल आप पूरी तरीके से उसका एनालिसिस करते हो, ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सैम्पल एंड ऑल्सो इट्स अमाउंट, देन इट इज कॉल्ड एज complete analysis. Okay, so there are these four types in this particular category. Then next category is the analysis based on size of sample. तो पहले में हम लोगों ने क्या देखा, टाइप्स है ना, क्वालिटेटिव कितना प्रेजेंट, मतलब क्या प्रेजेंट है, उसका नेचर कैसा है, कलर कैसा होगा, दैट वी हैव डिटरमाइन. और सेकंड कैटेगरी में हम लोग क्या देखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ सैम्पल. आपको जो सैम्पल मिला है वो कितनी अमाउंट में मिला है ना. तो कोई सैम्पल जैसे नेचर में अबंडेंट अमाउंट में होता है, बहुत सारे अमाउंट में होता है, तो हम लोग उसको जी चाहिए उतना यूज़ कर सकते हैं फॉर द एनालिसिस. बट सर्टन सैम्पल्स आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल अमाउंट जो प्रेशियस होते हैं, है ना. जैसे आप कोई गोल्ड का सैम्पल कर रहे हो तो आपको वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना होता है, स्मॉल अमाउंट. या फिर किसी पर्टिकुलर प्लांट का एक्सट्रैक्ट है, सो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन वेरी स्मॉल अमाउंट. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट the first category is called as macro analysis. So it refers to the analysis where the size of sample is more than 100 milligram. मतलब आपको जो सैम्पल मिलेगा उसकी अमाउंट कितनी होगी, 100 मिलीग्राम, और वी कैन से 0.1 ग्राम. ओके, अगर आपका सैम्पल लिक्विड है तो इट विल बी 100 माइक्रोलीटर और 0.1 मिलीलीटर, राइट. द नेक्स्ट कैटेगरी इज सेमी माइक्रो एनालिसिस. तो मैक्रो से थोड़ा कम होगा ऑब्वियसली. सो इन सेमी माइक्रो एनालिसिस द सैम्पल साइज इज इन बिटवीन 10 मिलीग्राम टू 100 मिलीग्राम, है ना. और अगर आपके पास लिक्विड सैम्पल है तो इट विल बी 50 माइक्रोलीटर टू 100 माइक्रोलीटर. मतलब मैक्रो से और भी आपका सैम्पल साइज कम होता है. And the third one is called as microanalysis. So in microanalysis, your sample size is just between 1 to 10 milligram. Okay? या अगर लिक्विड है तो इट विल बी जस्ट लेस दैन 50 माइक्रोलीटर. ओके, सो अगर आपका सैम्पल इतना कम है, बहुत कम है ना. देखो 10 मिलीग्राम मतलब कितना कम होगा. सो फॉर दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग और दिस टाइप ऑफ एनालिसिस स्पेशल टाइप ऑफ एपारेटस आर प्रोवाइडेड. तो जहाँ पे आपका जो नॉर्मल पिपेट ब्यूरेट होता है वो भी बहुत छोटा होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो पिपेट और माइक्रो ब्यूरेट.
So this type of analysis is also performed using various reagent and even also microscope to determine the observation. Okay. So this way, depending upon the various type, the chemical analysis is applicable. Then in next part of this particular chapter, we have discussed about the method of chemical analysis. अगर हम ये एनालिसिस करते हैं तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है ना, केमिकल एनालिसिस क्या होता है, केमिकल एनालिसिस क्यों करना होता है, फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस. देन वी हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, है ना, कौन कौन से एनालिसिस कर सकते हैं. तो दैट इज़ पार्शियल, कंप्लीट, ट्रेस, है ना. और अगर क्वांटिटी में बात करेंगे तो मैक्रो, माइक्रो एंड सेमी माइक्रो, लाइक दैट. तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये सारे केमिकल एनालिसिस एक्चुअल किन मेथड्स से किए जाते हैं. व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, है ना. मतलब आपको जो एनालिसिस करना है डिपेंडिंग अपॉन साइज ऑफ सैंपल, है ना, तो वो कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं. तो द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज क्लासिकल मेथड्स. क्लासिकल मतलब ओल्ड मेथड, जो पहले के ज़माने में भी यूज होते थे. दैट इज़ कॉल्ड एज क्लासिकल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस. और फिर दूसरा टाइप है इंस्ट्रूमेंटल मेथड. दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन क्लासिकल मेथड. जो लेटेस्ट है ना, तो उनकी अपनी कुछ खासियत होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस. सो अगर हम लोग अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग क्लासिकल मेथड, तो हियर वी आर यूज these methods to separate, identify and quantify the sample, or we can say the matter. So classical methods can be carried out using in routine laboratory with simple equipments. जो old methods थी वो simple laboratory में भी कर सकते थे और वहाँ पे कोई बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. So also using these simple methods they give quite accurate result and even they are sensitive. मतलब अच्छे रिजल्ट मिलते थे. okay, so what are the characteristics of classical method? so there are simple procedures. जो ये क्लासिकल मेथड है उनकी प्रोसीजर बड़ी सिंपल होती है. देन दे आर चीपर. वो जो इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ होते हैं वो कंपैरेटिवली कॉस्ट कटिंग होते हैं, सिंपल कॉस्ट के होते हैं. एंड नो स्पेशल ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड. ये मेथड अप्लाई करने के लिए ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं रखती. ओके, सो दीज आर वेरी सिंपल मेथड्स यूज्ड इन सिंपल लेबोरेटरीज एंड लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग. उनमें टाइम ज़्यादा लगता है. एंड ऑल्सो द स्पीड ऑफ एनालिसिस इज़ लेस. ओके, लेकिन वो सिंपल होते, चीप इक्विपमेंट्स लगते and even not special training is required. Then there are second type of method which are called as instrumental method. तो instrumental methods कैसे होते हैं? See, they are very fast. अप्लाई करने के लिए बहुत easy होते हैं and they are quite fast. Then they are non-tedious. Non-tedious मतलब उनको करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट हम लोग कर सकते हैं. इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना होता है तो इजीली वो परफॉर्म हो जाते हैं. देन इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज़ रिक्वायर्ड. क्लासिकल मेथड में आपको ज़्यादा सैंपल लगता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड में अगर आपके पास बहुत कम सैंपल है तो भी हम लोग इजीली एनालिसिस कर सकते हैं. सो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज़ रिक्वायर्ड एंड फाइनली they are very sensitive. So these methods are very sensitive, they give more accurate results. Okay, so these are the different type of methods of chemical analysis. The further things we will see in the next chapter or next lecture. Till that, you take care and stay safe. Thank you.